going to present my topic is automation in a medical industry. So first of all, everyone please sit down, and first I would like to ask, are you comfortable with English or Hindi or mix? I can't hear. Mix. Okay. So before going to start, I would like to say that automation is the future. Everybody agree with that? Automation is the future. Everybody knows that today's world is going through the automation. Everybody knows that in present time, many industries are going through the automation, like you have seen the driverless cars and driverless equipments and robotic surgery even. So we in a medical industry, we also focus on automation, and it would like to, it will help us to improvise a medical industry, medical science, diagnostics, surgeries, treatments. Okay. So first we will discuss what is automation, what we call automation. And automation is something like a thing we can done without a human effort, right? Like it is a technology, you can say, by which a process or procedure is performed without a human assistance. And in clinical laboratory, it is defined as a process by which analytical instruments perform many tests with least involvement of analyst. There is basically two types of automation, like semi-automated and fully automated. Most of the clinical laboratory students have seen that. How many of you are clinical laboratory students, MLT or MLS? Very less. And how many of you are from radiology technology? Okay. So most of you aware about the automotive, like CT, MRI, देखा होगा आप लोगों ने. कभी सोचा है कि अगर हम रेडियोलॉजी में ऑटोमेशन का यूज़ नहीं करते, सपोज MRI में, देन हाउ इट विल बी पॉसिबल टू गेट इंटरनल पिक्चर ऑफ पेशेंट. कैमरे से तो नहीं ले सकते थे. वी कांट यूज़ माइक्रोस्कोप इवन, राइट? जैसा अभी पहले सर ने बताया कि यू कैन नॉट टेक एग्जामिनेशन ऑफ एलिफेंट थ्रू द माइक्रोस्कोपी, राइट? So we will discuss about the both of the technique, like semi-automated and fully automated. Now, what are the role of automation in medical industry? What kind of things we can get through automation? Like computer technology is widely used throughout the medical field, and computers are used for everything, from testing products to determine the safety and effectiveness of new drugs. Even the testing drugs, like medical laboratory, use the computer technology to test thousands of different drugs before implementing to the patients. Running simulation, most of the nursing students knows about the simulation. Simulation is the very, very important part of the medical industry. With an example, I can explain you. Suppose you have you don't have an aeroplane, but you have to learn the, how to play the aeroplane. Even you don't have a car, but you want to learn about how to drive. Same, you want to learn about the surgery without a patient. अगर आप कोई सर्जरी सीखना चाहते हैं, सपोज आप कुछ भी सीखना चाहते हैं, बट यू डोंट हैव द एसेट्स, यू डोंट हैव द मटीरियल, दैट टाइम सिमुलेशन कैन हेल्प यू. It will allow you to feel the exact environment. It will allow you to feel the exact pressure. जो भी प्रेशर सर्जरी के दौरान आता है, जो भी प्रेशर आपको ड्राइविंग के दौरान आता है, ये चीज़ आपको पहले से ही एक्सप्लेन कर देगा, पहले से ही आपको फील करा देगा. सपोज यू आर सिटिंग इन अ चैम्बर वेयर यू हैव टू ड्राइव अ कार, यू विल फील एग्जैक्टली. आपने देखा होगा वीडियो गेम्स में, मूवीज़ वगैरह में, या मॉल्स में भी आजकल अवेलेबल है, तो बाइक्स वगैरह पे राइडिंग करते हुए एग्जैक्ट फील आपके सामने एक स्क्रीन रहता है और आप फील करते हैं कि यू आर राइडिंग अ बाइक, यू आर ड्राइविंग अ कार. सेम टाइप यूज़ होता है मेडिकल इंडस्ट्री में. सिमुलेशन हम उसको बोलते हैं. लाइक यू आर यूजिंग अ डमी,
डमी आपने देखा होगा, नहीं देखा है? एनर्जी डाउन हो गई है लगता है बच्चों की काफ़ी डाउन हो गई है। यू डोंट हैव डमी इन योर कॉलेजेस? डमी नहीं देखी है? देखी है ना? यू डोंट हैव मोडालिटीज, यू डोंट हैव इंस्ट्रूमेंट्स इवन? देखे होंगे आप लोगों ने, आपके टीचर्स सिखाते होंगे हाउ टू यूज द इंस्ट्रूमेंट, हाउ टू यूज द डमीज टू एग्जामिन द पेशेंट, राइट? एग्जैक्टली पेशेंट को तो नहीं लेटाते हैं ना काउच पर, डमीज रहती हैं। सेम टाइप सिमुलेशन कैन यूज टू एक्सप्लेन, टू ट्रेन द टीचर्स, इवन स्टूडेंट्स, to how to use, how to tackle a exact situation, right? Now third point where we use the automation is in a blood work, where the taking blood samples and analyzing the results in an important part of the medical lab. So sophisticated computer technology can quickly determine the levels of protein, amino acids, sugars and other elements from the blood sample, and they are used to generate results that are sent back to the patient's physician. Like आप लोगों ने when we talk about the early 90, 40 or 50 or 60, 65, that time we don't have autoanalyzer, we don't have fluorescent microscopy, we don't have automated things like CBC, Coulter counter, हम लोगों के पास नहीं था। जैसे CBC अगर कंप्लीट ब्लड काउंट करना है, वी हैव टू मेक द स्मीयर, देन आफ्टर मेक स्टेन, देन आफ्टर वी हैव टू यूज द माइक्रोस्कोपी, एंड बहुत एक्सपर्टीज लगती थी टू काउंट द सेल, टू एग्जामिन द सेल, टू आइडेंटिफाई द सेल. But nowadays we just have to take the sample and aspirate in a CBC Coulter counter, and then after we will get the result automatically. देखा होगा आपने कभी स्मीयर वगैरह देखा है, ब्लड पिक्चर देखा है? तो अगर सिंपली ब्लड पिक्चर आपको बनाना पड़े तो काफ़ी एफर्ट लगता है, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ चांसेस टू हैव एरर, काफ़ी उसमें दिक्कत आती है, स्टेन कभी प्रॉपर नहीं हुआ है, कभी आपका स्मीयर नहीं बन पा रहा है, इवन एग्जामिनेशन में भी आपको बहुत एक्सपर्टीज देखनी पड़ती है, हाउ टू आइडेंटिफाई द सेल, डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लड सेल्स एंड क्वांटिटी, राइट? बट नाउ डेज वी हैव अ Coulter counter, we have a CBC cell counter, we can use, and within a 2 minutes we will get the result with 22 or 25 parameters, right? So there it will help with the help of automation. Now generating a research data, this particular point is for our research scholars, that automation can also help to generate the research data. Recently a word can published ChatGPT. Anybody aware about that particular word, ChatGPT? This is the advanced version of AI, which we call also automation, which will be also useful in a research. Like in medical lab, tons of patients record can be presented in a computer on a usable format, and information from a patient outcomes to the result of a drug testing can be used in generating research data on computer. Then after we will also use the analyzing patient data. Like for an example, you have a different flow of patients. जैसे कि आपके पास suppose we will talk about the radiology, आपके पास एक्सरे के बहुत पेशेंट्स आए हैं, suppose डेली आपके पास 100 पेशेंट आते हैं, ठीक है? तो विदाउट एन ऑटोमेशन यू कैन नॉट एनालाइज ईच एंड एवरी पेशेंट इन अ सिंगल चार्ट, ठीक है? आप एक एक पेशेंट को देख सकते हैं कि हाँ भाई किसी को चेस्ट एक्सरे कराना है, किसी को नी एक्सरे कराना है, किसी को फुल बॉडी एक्सरे कराना है, बट एट द एंड अगर आप जानना चाहते हैं कि कितने पेशेंट हमारे पास एक्सरे के आ रहे हैं, कितने पेशेंट हमारे पास नीज के आ रहे हैं, आप एक डेटा जनरेट करना चाहते हैं कि किस तरह का पेशेंट फ्लो हमारे इंस्टीट्यूशन में, हमारे हॉस्पिटल में है, दैट टाइम दिस ऑटोमेशन विल हेल्प यू. दिस ऑटोमेशन विल गिव यू द एग्जैक्ट रिजल्ट दैट इतना पेशेंट आपका नी का है, इतना पेशेंट आपका चेस्ट का है, इतना पेशेंट आपका टीबी का है, अदर डिजीजेस का है. उसके अकॉर्डिंगली यू कैन इम्प्रोमाइज योर डिपार्टमेंट, उसके अकॉर्डिंगली यू कैन इम्प्रोमाइज योर ऑल द सब्जेक्ट्स. Now this is the new thing which will be used in a laboratory system. We can say intelligent laboratory information system. In this, lists are a critical component of the operation of a clinical laboratories.
I will explain you in a simple manner. This system will help diagnostic team, this system will help physician, this system will help the patient as well. It is a system which will be connected or interface between patient, physician and the diagnostic system. Simple manner है कि एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पर पेशेंट एंट्री करता है, आप उसको एक रजिस्ट्रेशन आईडी देते हैं या पेशेंट आईडी देते हैं, ठीक। उस पेशेंट आईडी को हम लोग एक तरह से पूरे डिपार्टमेंट में फैला देते हैं. अ फिजिशियन हैव दैट पर्टिकुलर आईडी, लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट हैव दैट पर्टिकुलर आईडी, और पेशेंट को भी वो आईडी है, एंड विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ही विल गेट हिज रिजल्ट एट हिज होम. उसको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, उसे हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है फॉर गेटिंग अ रिजल्ट, राइट. With the help of this system, you can discuss the critical situation or a problem with the another expert from another university or another state or another country. इस सिस्टम की मदद से आपको कहीं रिपोर्ट भेजने की ज़रूरत नहीं है. You just have to send the ID to the expert, and expert will get all the details of the patient, and he will suggest all the suggestion or therapy or a diagnosis to the patient or the concerned physician also, right. Now the categories of laboratory information system, where will information manager will work, healthcare provider can have their technical staff, manager, laboratory director and patients. They all can get the benefit from this particular system, this particular software. This kind of software mostly used in a super specialty or multi-specialty hospital, where they have to tackle lots of tons of patients in each and every day. So it is very hectic to manage all the patients. That time this automation can help to manage the patient in a very safe way. Now these are the useful information associated with reagents and other test components, where this LIS system can work on the platform of these things, where you have to mention the name of the component, manufacturer, if we're talking about that medicine or reagents or something else, where you have to put the catalog number, lot number, date, time, initial volume, current volume, expiration date and storage requirement. तो दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है ना कि ये सब चीज़ें क्यों लिखना है, ये सब चीज़ों का इंफॉर्मेशन हमें क्या क्या हेल्प करेगा. दिस विल हेल्प टू टैकल द सिचुएशन, दिस विल हेल्प टू ट्रैक द प्रॉब्लम्स, दिस विल हेल्प टू. देखिए, आपके पास कोई रिएजेंट आता है, या सपोज कोई ड्रग्स आता है, या सपोज कोई डायग्नोस्टिक मटेरियल आता है, ठीक है. हम लोग अच्छे हॉस्पिटल की अगर बात करें, बेस्ट हॉस्पिटल की बात करें, तो वी विल टेक क्वालिटी कंट्रोल फॉर दैट पर्टिकुलर रिएजेंट और द मटेरियल्स, राइट. उनका क्वालिटी कंट्रोल करते हैं, बट उसके बाद भी जो प्रोबेबिलिटी है वो 99%, 98%, 95% है. देयर इज़ अ लूप होल ऑफ 5%, राइट. उसके बाद भी जरूरी नहीं है कि वो आपका सब्जेक्ट या वो चीज़ सही है. इवन देयर इज़ अ क्लैरिकल एरर, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है कि आपका लिखा पढ़ी में कुछ गड़बड़ी हो जाए, ठीक. या फिर इसके बाद एनालिटिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है, आपसे गलती हो जाए, आपने किसी को बताया नहीं. तो अगर हम चाहते हैं कि हम ट्रैक कर सकें कि कहाँ पर प्रॉब्लम है, वहाँ पर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि भैया क्या लॉट नंबर था, कब आया था, किसने रिसीव करा था, उसका क्वालिटी चेक हुआ कि नहीं हुआ, एंड ईच एंड एवरीथिंग शुड बी इन अ रिटर्न. दैट्स वाई वी टॉक अबाउट द ऑटोमेटिव सिस्टम. आपको कंप्यूटर में इसकी डेटा एंट्री करनी पड़ेगी. डेटा एंट्री करने के बाद ये सबके पास डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, सो दैट यू कैन बी easily track that particular problem, right. We can use automative system in a data mining and a cross-sectional reports, which will give us to ability to perform queries in the laboratory and clinical database is significant to maximize the efficiency and quality of the laboratory operation. It also provides means of identifying clinical issue affecting a specific population. It performs epidemiological and public health studies and case finding for the clinical and research purpose. Like this corona period, सबने देखा है ना, ये कोरोना पीरियड 2 साल का देखा है ना, बहुत प्रॉब्लम हुई थी. इवन यू पीपल्स ऑल्सो अवेयर अबाउट द ऑनलाइन एजुकेशन, देखा था. इट कैन बी बेटर विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन.
आपने देखा होगा कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने अपना खुद का ही प्लेटफॉर्म बनाया हुआ था फॉर टीचिंग पर्पस इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, बट कुछ लोगों ने जूम और सम अदर एप्स यूज़ करे थे. तो देर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दिस पर्टिकुलर एप्स एंड द स्पेशलाइज्ड ऐप made by the university and made for the university like Blackboard and other. तो आप अगर अवेयर हैं इसके बारे में तो आपको खुद ही पता चल गया होगा कि ऑटोमेशन में कितना पावर है, राइट? नाउ एडवांस डेटा वेयर हाउस एंड माइनिंग कैपेबिलिटी शुड बी अवेलेबल इन एन एडवांस LIS सिस्टम, like example of useful queries and reports including the following, like search combination of the lab result with diagnosis, medications and treatment using a Boolean logic, and producing report with user-friendly display of queried and non-queried field like patient's demographics, specimen accession number and location. Such reports should be exportable to Excel sheet for further analysis. Lab testing turnaround time reports would be with the ability to consolidate or split various components like other order to collection, and collection to receipt to testing, testing to report including individual test or test group, hours and shift, employees, patient location, clinic, providers, etc. and so on. Now surveillance data reporting to public health agencies required in a standard format, laboratory utilization report by the provider, specialty, clinics, wards, patient types, diagnosis and diagnostic groups, test type, volume and cost per cases, patient's outcome analysis using laboratory data mining capabilities and clinical data extracted from the HIS. Now we can use automative system in a bioelectric signaling, like for the example ECG, EEG, EMG, EOG. Everybody aware about these names? Can anyone explain what is the full form EEG? Radiology, I'm asking to you. सब फर्स्ट ईयर के हैं. EEG का फुल फॉर्म what is ECG? Okay, what is EMG? Yes, electromyography. And what is EOG? क्या हो गया रेडियोलॉजी? ये तो बेसिक है, ये तो आपका काम का पार्ट है. Electro. Okay, now the automation in cytology. This is the very hardest part of the diagnostic industry. Cytology, examination of the cytology, right? Despite manual screening, some faults do exist, prompting development of viable automated system. Cytology is a science concerned with the structure and function of the plant and animal cell, where automation in cytology started and was focused for a long time on a pap smear. Later, a pap smear were applied to broader area of a cytology. Now, जिनको पैप स्मीयर नहीं पता है वो जान लें what is pap smear. Pap smear requires a sample of a cell collected from the cervix for testing. Mostly it is a staining procedure which will be help to diagnose the cancerous cell or tissues. Okay, and the first attempt to automate the screening of a cervical smear was in the 1950s, where Mallows and co-workers developed a scanning device which we called cytoanalyzer. And this particular device is an electronical optical apparatus for the detection of malignant cells in a smear. It helps to collect data on nuclear size and nuclear optical density of the large number of cells, and the process was slow due to lack of computers. Now later in 1990s, an improved technique of pap smear called thin prep was introduced, which is approved by FDA.
And then after clinical trials confirmed increased sensitivity compared to the conventional pap smear. This helped in saving lot of money and unnecessary recall visit and negative colposcopic examination and biopsies. Colposcopy क्या होती है? It is a medical diagnostic procedure to examine a illuminated magnified view of the cervix. So most of the people are, affecting by the cervical cancer, these kind of, cancer of cervix. This kind of cancer can be diagnosed only through the cytological smear preparation or the microscopy you can say. तो इसमें काफ़ी टाइम जाता था. एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, इन पैथोलॉजी diagnosis is easy, but some kind of disease can be very hard to diagnose, like especially if we talk about the cancer. Most of the cancers are very, very difficult to diagnose or differentiate, like leukemia, lymphoma, myeloma, and most of the cancers like cervical cancer, which will be happen, increase day by day, like 72%, patient having a cancer, in 72% peoples are having a breast cancer, right? So females should be aware about that thing. ठीक है? तो वहाँ पर आपका साइटोलॉजी बहुत यूज होता है to diagnose that particular cancer. Now what is the need of automation? We again discuss about this thing. Failure to detect the abnormalities in the cell during a screening was major challenge faced in many cases. Many errors in reports occurs due to overlapping of a cell and a nuclei and obscuring factors. Automated instrumentation may improve sensitivity, reduce unsatisfactory specimen, and increase turnover rates. That's why we need automation. Now, what are the goals of the automation? To improve the accuracy of the test result, to shorten the length of the time need to perform test, obtaining a slide that is representative of original sample collected from the patient, rapid, reliable, and reproducible screening. The system should be able to send alert on a smear adequacy, and the system should select suspected cell slide for the cytologist to obtain final outcome. This one is the picture of a thin prep processor where we can easily use a smear procedure to diagnose the cervical cancer and problems of the cervix. These are the references you can use. And last, thank you everyone to inviting me here. Is there any question to anyone? No. Thank you.